Hello everyone, this is CrickBucks, a new channel for cricket insights. Who's our sponsor, guys? पहला वीडियो कोई नहीं है अच्छा हमारा कोई स्पॉन्सर है नहीं इसीलिए तो रॉ है इसीलिए रॉ है और fearless है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम बोलता है we need to be fair. we need to be fearless. So guys, basically हम लोग नया चैनल इसलिए हैं क्योंकि four of us have some cricket background. हमने क्रिकेट देखा है बचपन से, खेला है, तो थोड़ी बकचोदी हमारी डे टू डे में भी चलती रहती है. तो what we want to do is we want to bring some insights आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आप लोगों के भी कमेंट्स आए और हम उसको आगे शेयर कर सके सबके साथ. That's the intent of this channel. My name is Karan Diwan. Hi everyone, I'm Sid. Hi, this is Kush. Hi, this is Abhishek. Four of us are called CrickBucks. So thank you. Today, basically, we are here to review Indian cricket team's World Cup squad. And you will be seeing a lot of series of videos coming up down the line for all the teams, post-match analysis, pre-match analysis in some cases as well. And that's how we're going to start with our series of World Cup, Cricket World Cup series. रॉ रख यार. Huh? रॉ रख. Raw रख. Thank you. मैं थोड़ा सा formal हो गया. हाँ. Cool guys. Sure. We should start with India's squad. All right. Yeah, so we're discussing the 2011 World Cup champions, We should be. the hosts, and most probably 2023 World Cup champions. There Fingers you go. crossed. Fingers And crossed. again, home champions. Hopefully. World Yeah. Cup हमारा है guys. World Cup Oh, हमारा है. yeah. Right. Guys, चाहे guys, चाहे guys. इंडिया हो या भारत हो, वर्ल्ड कप हमारा है. हाँ. That's Right. it. Okay. Sorry, तू बोल रहा? मैं कह रहा था क्या कह रहा था यही rawness है. Yeah. भूल गया लोग. यही आम जिंदगी. ठीक है. Why don't we start with batters? Yeah. Indian batting. बड़ी Okay. form में है, बड़ी hot form में है. Yeah. Why don't one of you guys start with something? So I think that Indian batting squad is like completely in form. Like especially ये जो 7 मैच खेले हमने एशिया कप और ये सारा चीज खेले इसमें मोस्ट लाइकली हमारे बैटर्स लाइक ओवर 50 एवरेज कर रहे हैं. एक माइनस पॉइंट था हमारा कि सूर्या वाज नॉट परफॉर्मिंग इन ओडीआईज. Right. वो भी ही हैज कम इनटू हिज ग्रूव एंड ही इज प्लेइंग सम एक्सेप्शनल नॉक्स. Yeah. ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने वो भी मेकओवर कर लिया है. एंड देन केएल इज बैक इन फॉर्म. फाइनली ही हैज गॉट हिज नंबर. Yeah. जो मैं कभी एग्री नहीं करता था कि ही शुड ओपन और नॉट, बट राइट इज एट 4 ही इज लुकिंग वेरी फोकस्ड. और I think KL के बारे में हम सबके काफी comments भी रहे हैं. काफी diverse बहुत raw opinions. comments रहे Yeah, हैं yeah. जो हम I think यहाँ पे share नहीं कर नहीं सकते. कर But सकते. at the end of the day उस बंदे ने अपनी respect Yeah, कमाई है. absolutely. Yeah. He has come back stronger after the injury और उसने काफी runs भी बनाए and he is looking very promising. Yeah. Right? What do you think? Yeah, I agree. Like Kush said, कि उसको अपना number मिल गया. So that's good. He was never an opener. We tried him out. He didn't succeed. But Yeah. now he's looking good. He's keeping. That's the key. So that gives us additional element of playing another player. For me, the key player batter is Rohit Sharma. I feel like I can see the intent. I can see Yes. the hungerness Agreed. back. Yeah. And with the talent, I feel he's my key batsman for this World Cup. But my question to you guys, are you with Rohit Sharma of scoring 50 or 80 or 50 balls or him scoring 150 or 150 balls? Which one do you like more? I feel like his style of cricket, he'll always be like 100 plus strike rate. So I'm not worried about like whether I don't want him to go bananas. Yeah. when you say कि you want 80 और 150, you need to understand कि भाई उसकी फिटनेस लेवल भी ड्रॉप हो गया है. Exactly. पहले जब वो 150 करता था, अब अगर मान लो 80 रन बनाने के बाद उसके वो शॉट में वो नहीं आ रही है, पावर नहीं आ रही है ड्यू टू फिटनेस, क्योंकि फील्ड खुल जाएगी. एंड इफ ही इज बैटिंग विद विराट कोहली ने थका देना है उसको. Right. तो फिर यू हैव टू मेक श्योर दैट अगर आप भाई 8 बैट्समैन लेके खेल रहे हो तो उसके 80 रन इनफ होने चाहिए. But 50 with balls him, में. I've seen he never plays for records. He's one guy I've Yeah. never felt like he's playing for 100. You know, like some players slow down after 90 and stuff. With him, like he's genuinely after Sehwag, he's Yes. one guy I'm never be like And, if I get out. Karan, And what that do is you true. think? Yeah. Because मैंने अभी उसका पीछे comment पढ़ा, उसको किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि भाई आपके 2019 में बड़े सारे वर्ल्ड कप सेंचुरीज थी, do you want to repeat that thing? His comment was very good. उसने बोला कि यार देखो 2019 में मेरी 5 सेंचुरी जरूर थी, but हम वर्ल्ड कप नहीं जीते थे. Exactly. Yeah. So he's like, I rather score as per team's requirement. Yeah. चाहे मैं 60 मारूं, 80 मारूं to set the platform for Yeah. the team and we win the World Cup than me having 5-6 centuries जो हमें at the end of the day World Cup ना दिलाए. और वो So I think the mindset is very clear. Yeah. But the Obviously- question still remains. Sorry, Kush. Yeah. The question still remains: 80 or 50
or 150 over? I think it depends on the match. अगर बड़ी टीमों के खिलाफ मैच है तो इम्पैक्ट देना जरूरी है ओपनिंग स्टैंड में, क्योंकि हमने आई थिंक पिछले एशिया कप में और अभी रिसेंट मैचेस में देख लिया, अगर हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी है, 100+ की पार्टनरशिप मिली है, तो इट सेट्स द टोन फॉर द बैट्समैन एंड देन आपका मिडिल ऑर्डर कैपिटलाइज कर देता है. आई फील लाइक इंडिया में हम लोग इतना लुक अपॉन करते हैं अपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन में, अगर वो नहीं चलते तो नीचे वालों पे ऑलरेडी प्रेशर आ जाता है. So it's very important for also going at भाई मैं तो straight up बोलूँगा I need Rohit's 80 or 50 because मेरे को अगर ये वर्ल्ड कप जीतना है, इंडिया का वर्ल्ड कप है और सारी चीजें हैं, मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना ज्यादा इसको 2011 से रिलेट कर सकूँ. 2011 अगर आप एग्जांपल ले, पाकिस्तान का गेम जो था उसमें जो बेस्ट नॉक थी ना वो वीरेंद्र सहवाग की थी 35 की जो स्टार्टिंग में थी, और 35 की रैना की जो एंड में थी, 5 चौके जो उमर गुल को मारे. तो प्रीटी मच वी डोंट नीड बिग रन्स फ्रॉम रोहित, बट अगर हमारे पास रोहित जैसा एक इंपैक्टफुल प्लेयर है जो स्ट्रोक्स खेलता है, ही डजंट स्लॉग, तो आई थिंक मैं तो उसकी 80 और 50 लूंगा. Why are we discussing the strike rate? What we are agreeing upon here is कि वो अपनी natural game खेलेगा, we'll be fine. Right, that's what pretty much you're saying. Exactly. The only pointer was he shifted his game, right? तो उसका जो game अगर आप analysis करते हो 2019, 2020 से, I think he shifted his game towards a more aggressive intent at the start. You know, he's going out and bashing everyone like he wants to, and that is the point, right? So that was the and I think exactly, and I think it suits well for us. Yeah, and I guess like now that's his game, so he's gonna play that. Exactly. So that is like I think we're obsessed with hundreds, but we should be doing away with that. मुझे ऐसा लगता है कि in a game or in a low chasing game, 50 of 30 or 50 of 40 is more impactful, or you know, with a higher strike rate. But again, I like beg to differ. Now, like the team is not running after hundreds. Everyone is a team player now, and they play more. It's not the era of 90s where like yes, 100 meant. Now we as like audience have like are educated enough, know like hundreds don't win you big tournaments. Like Karan said, like 500s. For Rohit Sharma didn't win us the World Cup, right? So it's, and they understand. Most importantly, the people on the field understand, and everyone just wants to play their role and contribute to the win. I think what we all are saying कि आज के era के cricket में कोई templates नहीं बचे हुए. Yeah. अच्छा, to sum it up, sorry. Name, I think we should name one batter जो हम चारों में से हमें लग रहा है कि भाई ये हमारा बेस्ट बैटर होगा. Sid, I guess, have very well said, like his batsman is Rohit Sharma. What about you, Karan? I think Shubham Gill. What happens is कि मेरे हिसाब से मेरा mindset जा रहा है जब विराट कोहली एकदम टीम में आया था, and 2011 to 2013 was his breakthrough years, especially 2012 वाला I guess. I think this might be Shubham Gill's breakthrough year because उसने double century भी मारी है, he's scoring well, he's scoring in the IPL as well. जैसे विराट कोहली had that amazing year. But to support your you know comment, I will take शुभमन गिल. अगर वो करता है ना तो दैट विल बी बिगर देन विराट कोहली. द रीजन बीइंग विराट को 2011 से लेकर 2013 तक ग्रूम किया गया था. तेंदुलकर ने ग्रूम किया था, सहवाग ने ग्रूम किया था, क्योंकि वो दिल्ली वाला सारा था ना, गंभीर ने ग्रूम किया था. बट शुभमन इज वन हु इज गोना फेस द फर्स्ट ओवर, राइट? तो अगर वो विराट वाला, अगर उसका विराट का अगर वो 50% भी रेप्लिकेट करता है ना, अब जो मुझे लगता है वो ज्यादा ही करेगा, उसकी अचीवमेंट ज्यादा है बिकॉज ही इज द वन हु इज फेसिंग द ट्यून्स. That's true. I agree. 2011 to 2013, Virat Kohli was getting like into the groove. He was not that big an impact player because he was playing around big stars, right? Whereas Shubham Gill, we all have seen even in IPL and like 200 in one day, he's that impact player. So if he gets going, he can like change the entire game at this age. So right. Who's your best batter then? I hate to say this, but it's gonna be Virat Kohli. I support that. Mine is to hats off Virat Kohli. Yeah, it's his probably last World Cup. Probably. 2027 में आ जाएगा. है. आ जाएगा नहीं आएगा. I don't know. But I think I have a gut feeling he's not gonna go big, but he's gonna have a good impact. He's gonna have a great impact. Those 50s, 60s, the chases. I think मुझे ऐसा feel आ रहा है कि he's gonna, you know, I'm getting goosebumps while saying this. Yeah.
I think he's gonna get us home this time. I feel the same. Mine is Virat Kohli too. Because you know मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि जब इंडिया नीदरलैंड से खेलेगी कौन रन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, इंडिया अफगानिस्तान से खेलेगी, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है. Yeah. मुझे ये पता है कि जिस दिन गेम होगा इंडिया पाकिस्तान या जिस दिन गेम होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उस दिन कौन आएगा, राइट? कौन नर्वसनेस शो करता है, कौन क्या करता है. और मैं ये नहीं कह रहा कि नर्वसनेस अभी भी कोई शो करेगा, बट यू नेवर नो, राइट? लेकिन एक बंदा है जो आपको हमेशा प्रूवन फैक्ट है. ठीक है, हमने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, कभी कुछ नहीं करा, लेकिन जब भी बड़ा गेम आया ही स्टूड अप. अदर देन वो 2-3 जो नॉकआउट्स हैं जिसमें कोई भी नहीं चलता, तो ठीक है विराट भी नहीं चला, लेकिन और गेम में ज्यादा देन जो बिग गेम्स हुए इंडिया पाकिस्तान और वो, हमेशा विराट कोहली इज ऑलवेज देयर. आई थिंक हम सबके मन में वही है. एक पॉइंट और है, प्रोबेबिलिटी, राइट? मैथ्स में और स्पोर्ट्स में प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है. तो प्रोबेबिलिटी किसकी है सक्सीड होने की इन अ knockout stage in a crunch game? India's top order. Rohit Sharma. So yeah, I think these are against the odds. I think it's time. And they are that big a player, and that we can't deny we are picking Rohit Sharma, Shubham Gill, so we can't deny like Kohli doesn't have a role to play. As a team, I feel like our top 5 are all match winners. It's just making that impact, how we are saying. But in a way हम चारों ने एक प्लेयर का नाम नहीं लिया. I feel कि टॉप 5 को हटाओ, हमारा नंबर 6 तो हमारा सबसे बड़ा प्लेयर हो सकता है वर्ल्ड कप का, हार्दिक पांड्या. He can be the ultimate cup, you know, he can pull out a cup in the bottle. He's the best all-rounder right now, like amongst all the teams in the tournament. But Karan, I'll second that. I won't call him an X factor. The reason being, X factor वो होता है कि all of a sudden आपको एक चीज मिल गई है, ठीक है, और आप वो करो. हार्दिक पांड्या इज अ प्रूवन प्लेयर. T20 को से इसीलिए कैप्टन बनाया. मैं उसको एक्स फैक्टर पता है क्यों बोल रहा हूँ. अगर आप सारी टीम्स को देखो, जेन्युइन पेस बॉलर विद अ प्रॉपर टॉप 5 ऑर्डर बैट्समैन आपकी किसी टीम के पास नहीं. ऑस्ट्रेलिया के पास टीम है. पेसर ब्रो. No, like Stoinis is not no. for the blood. If Mitchell Marsh is bowling, yes, then he's comparable to Hardik Pandya. Cameron Green is not there. Okay. Like Cameron Green is a better T20 player than 50 over, because 50 over he doesn't know how to sticking rotate. to Pandya, switching the now again number 4 versus number 5 discussion. Yeah, that's the discussion. So what's your take, Karan? What do you think? Yeah. Who's number 4? Who's number 5? Yeah, number 4 for me is definitely Rahul. Yeah. Based on the current form and the way this guy plays in the middle order, especially the spinners. जो हमने एशिया कप में देखा है. Yeah. Like even against that match in Bangladesh, he scored like 30 something runs, but वो जो spinners को वो late cuts and everything मारा था, I think it was pure class. Yeah. Moving to number 5, I think Ishan Kishan, because we need a lefty. Mm-hmm. And 4 and 5 should be flexible enough to be switched. अगर कहीं पे दूसरी साइड पे कोई ऐसा स्पिनर आ रहा है जो राइट बैट्समैन को ट्रबल कर रहा है, आई थिंक इट्स बेटर टू सेंड ईशान किशन बिफोर राहुल. राइट. सो ये फ्लेक्सिबिलिटी 4 और 5 में होनी चाहिए. दैट्स माय पॉइंट. ठीक है. Means just going by like the team setup, I would say at this point, and I feel like India would play Shreyas Iyer. I think so too. Again, like but what's your opinion? That's what I'm saying. Like, I'm not seeing Ishan Kishan. Yes, I would love to have a left-hander in the middle order, but he's a makeshift middle order player. And I proven fact, it's such a big tournament. I want to go with somebody who has played all his cricket in middle order. And if it was in Australia, I would have said like probably not Shreyas Iyer, just because his ability to play the short ball. Mm-hmm. But for me, if he's fit, he'll be like, it would be Rohit, Shubham, Kohli, Rahul and Iyer, top 5. मेरा ओपिनियन बहुत क्लियर है इस मामले में कि भाई अगर इट्स श्रेयस और केएल, देन मुझे फर्क नहीं पड़ता 4 पे कौन आ रहा है, 5 पे कौन आ रहा है. बट इफ इट्स वी हैव ईशान किशन, जो मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए, तो 4 शुड बी केएल and 5th should be Ishan Kishan. The reason being, we need a lefty. Because over the, like, it's a very small point. Over the past few years, I've seen India is not a good team जो टर्नर्स पे स्पिनर्स अच्छा खेलती हैं. एडम जाम्पा हमें तंग कर देता है, मोइन अली हमारे साथ शेन वॉर्न बन जाता है, आदिल रशीद हमें बहुत तंग करता है. तो वी नीड अ लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन. एंड आई सॉ दैट टू, लाइक व्हेन हम जो पहला अभी ऑस्ट्रेलिया से वनडे जीते हैं, उसमें मैंने देखा जब ईशान किशन आया उसने काउंटर अटैक में 30-35 किए, बट जाम्पा की लाइन और लेंथ हिल गई थी. That's the motive of having Ishan Kishan there. And to add to that, हमारा पहला मैच चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मार्च में हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, फाइनल हारे थे हम.
Yes, that was the final match of the Zampa नहीं series. हराया था And Zampa took 4 wickets I and he know was that, man of the match. But that was a different wicket. What about the IPL wicket? I think it was a high scoring during It was. IPL. Yeah, But that मुझे was- भी I beg to differ with your opinion कि he's not a makeshift. He's a whiteboard. अभी किशन को हम कैसे भी पेंट कर सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है he's a youngster. He should be ready to be adaptable to any position that he is given. Right? Dhoni started at 7. He's played almost all his life at 7. Rohit started at 7. Exactly. So मुझे ऐसा लगता है Kishan is someone who is like a whiteboard. You can paint whatever picture of him you want to. He has to be there just because of the ability. If India is 200 for 2 in 30 overs, he has the capacity to take us to 400. Yeah. Right? Whereas Iyer, we've often seen कि Iyer के साथ क्या है कि जब हम 200 पे 2 होते हैं तो हम पांड्या को ऊपर भेज देते हैं to hitting. Yeah. Which means कि हमें पता है कि हाँ उसकी हिटिंग शायद उस लेवल की नहीं है जिसकी हमें चाहिए उस टाइम पे. That's a good point. I think probably Kishan should be in, but I think Iyer would be preferred because he's been a number 4 for a while for us. Okay, let's go to the next point then. Number 8, do we prefer batter, all-rounder or bowler? यार ये बड़ा It's, इंटरेस्टिंग है. मैं it's इसको a बहुत tough पसंद one. कर रहा Well, था. ये इंटरेस्टिंग कभी भी नहीं था, अभी पिछले 7 मैचों से इंटरेस्टिंग बन हो गया गया है. Or maybe modern day game has to do a lot of what we're saying because हम अगर अपने आप को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं Yeah. तो उनके नंबर 8 आर एक्चुअली जेन्युइन ऑलराउंडर्स राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलराउंडर शुड बी देयर स्पेशली विद अश्विन. हमें एक वेटेज मिल गया है क्योंकि आई एम लीविंग आउट शार्दुल एट 8. I don't want Shardul at 8. यार मेरे लिए Okay, personally- but- हाँ. Answer the main question. 8, batter, all-rounder or I bowler? think all-rounder. नहीं, But if you are including Ashwin, that's not all-rounder. He's he's a bowling all-rounder. bowling all-rounder. Yeah. मतलब it's still considered as an Why? all-rounder. I just want to go back to some previous cricket times. नंबर 8 पे कब से डिबेट होने लगी कि हमें बैट्समैन चाहिए. I think it Yeah. should always be कि भाई तुम्हारे पास 7 बैट्समैन है, why they are not able to finish the job. I think it has to do something with how cricket has evolved. And आज की डेट में Exactly. 340 भी चेज हो सकते हैं. We have seen that in New Zealand Pakistan game as well. And based on जैसे BCCI ने ICC ने बोला है कि भाई पिचेस पे ग्रास छोड़ो ताकि ड्यू का भी फैक्टर कम हो and all. I feel there will be lot of flat tracks as well. Yeah. So scoring big will be there. So is that the thing why we need a proper or a good batsman who can get us like 30 balls में 50 runs चाहिए तो we need a batsman. That's why. यार मेरा ओपिनियन ये है इस मामले में कि आई थिंक हमें नॉर्मल स्टैंडर्ड से उससे चलना पड़ेगा. जो बड़ी टीम्स हैं उनके साथ हमें प्रॉपर बॉलर्स चाहिए. तो आई थिंक हम अपने तीनों पेसर्स खिलाएंगे उनके साथ अगर पेस ट्रैक होगा तो ठीक है. उसमें फिर जडेजा अश्विन और पांड्या हमारे तीनों होंगे जो बॉलिंग भी डालेंगे और बैटिंग भी करेंगे. But or Shami in place of Ashwin. नहीं मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ भाई, He's 3 saying पेसर all हैं. three तीन पेसर तो वो बोल तो दिया हमारे ना. 3 पेसर. तो अश्विन अगर खेलेगा तो फिर शमी थोड़ी खेलेगा. नहीं खेलेगा. कुलदीप नहीं खेलेगा. कुलदीप नहीं खेलेगा. कुलदीप कुलदीप हार खेलेगा. गया. कुलदीप Yeah. हाँ. वही तो. Yeah. But we need Kuldeep. तो Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि it will always be a toss up between. नहीं आई वुड से कि भाई अगर कुलदीप को खिलाना है, अगर आपको फिर कुलदीप को खिलाना है तो फिर 8वें नंबर पे फिर कुलदीप ही हुआ ना अगर तीनों पेसर खेल रहे हैं तो. Yeah. Exactly. तभी तो मैं बोल रहा था why are you Exactly. talking? Exactly. ओके तो मेन बात ये है कि 8वें पॉइंट का मेरा 8वें का मेरा ये है कि यार ये जो एक 8वें नंबर पे बैट्समैन का जो ये डिबेट चला है ना, ये यार वंस इन 4 इयर्स कोई ऐसा गेम होता है जिसमें 8वें नंबर का बैट्समैन आता है और ना वो 30 बॉल पे 50 कर गया और वो जीत गए हैं. बिल्कुल सही बात ठीक है है. यार. वरना whenever you are chasing over even like 280 ना और आपके 7 आउट हो गए हैं, कभी आपका 8वां नंबर कभी नहीं जीता है. आपको लगता है मेरा एक question है उस पे. डिसरिस्पेक्ट वाली एक पॉइंट हाँ, है. sure, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट शार्दुल्स एबिलिटी बट आपको लगता है अगेंस्ट गुड पेसिंग अटैक जैसे पाकिस्तान हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया और अभी हमने एशिया कप में देख भी लिया शार्दुल कमिंग इन एट 8 and scoring 30-40 He runs. can do that because He he did can, that. but when? See, I don't मेरा know, question I don't is, remember it's he an had open-ended question to all of you. Yeah. If we had, let's say, Ashwin or let's say Shardul in place of Yuzvendra Chahal 2019 के semi-final में, what's your take on that? Would we have crossed the line? No. No, I don't think No, so. assuming कि we were in a position. No. I don't think so. No. I don't think न्यूजीलैंड वाले मैच में हमें बॉलर्स को किसी भी एंगल से ब्लेम करना चाहिए. नहीं, not It was blame totally bowlers, man. batting. I'm saying कि As a because batsman, as a batsman, नहीं yeah. मतलब there wasn't any difference. जडेजा 7 पे 8 जडेजा आया था उस मैच में 8वें नंबर पे and he made the played well. difference. Yeah, Yeah. that's what I'm saying. So that's where things matter, right? So क्या हम उस चीज को
all-rounder. I don't think like to Kush's point, like if you're chasing 350, if your top 7 haven't performed, number 8 is not gonna make. Yeah, वो percentage की And बात then है. like वो 4 साल में एक बार कोई ऐसा गेम आएगा जिसमें हो गया. जैसे वो दीपक चांद ने किसी bilateral में कर दिया. to me, it's always like you get wickets, you win games. Yeah. And like Yeah. when you have 3 top class world quality bowlers, and we need to learn from history, like we need to learn from Australia. Whatever they do, they know their strength is pace. Yeah. At this point, India's strength is pace. Like at least the top 3. I They're agree. like world class bowlers. Siraj, Bumrah, Shami. So why are you gonna like, and I feel like with India, we sometimes do so many like permutation combinations. Safe खेलने की yeah, कोशिश करते हैं. and that gets us down. So just go all out attack, have 3 pacers, unless until it's a turning wicket you bring in now. Like I genuinely feel like Ashwin Inclusion is way better than Akshar Patel, and that's my personal. Just because he's been a part of World Cup winning squad, he has that temperament. If need be, he can just come in and like change even a one game world lead, class right? And he's a world class bowler. भाई I believe in youth promotion, so मेरा ये रीजन नहीं है अश्विन का, लेकिन मेरा ये रीजन है कि we need to have an off spinner too, because अगर हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से खेल रहे हैं या किसी और टीम से खेल रहे हैं जिसमें 4 लेफ्टीज हैं, तो उसमें सेंस नहीं बनता. Yeah, it was getting very one-dimensional. And Jaddu and Akshay just compliment each other. Yeah, They're the same वो बड़ा person. one-dimensional Yeah, हो गया. one-dimensional हो गया. Shami, I know Shami पे discussion जब हो रही थी, तो I just thought of this point. What is your thought on, or what is your guys' take on his one-day performance in general? शमी Yeah. यार आई फील वो तो हमेशा चैंपियन बॉलर रहा है. अगर आप पिछला वर्ल्ड कप भी उठा के देख लो, शमी ने बहुत अमेजिंग. मैं T20 की बात मैं एग्री नहीं करता भाई. I know that I don't agree. Shami in white ball He loses the plot. पहले 3-4 ओवर में he is exceptional, right? Right. आपने 2015 का वर्ल्ड कप अगर सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा है, Exactly. he was the one who was like bowling unplayable deliveries, but still when it went to the end, death bowling, no, I can't trust But it. Death that's bowling where का we भी need question to- है बड़ी. That's where we need to use him like that. We need to be mindful with Bumrah. And you know, like how you said, 3 overs if he takes 2 wickets. And that we saw in IPL. Like Gujarat Yes. Lions' Yeah. biggest asset was Shami in Shami. first power play. Exactly. Right? So that's how you need to use your resources. And if we saw, like, if he's unplayable in the first 6 overs and take like consistently 2-3 wickets, that's your game, right? Maybe and नहीं, फिर आपका तीसरा पेसर भी अगर यही बोलता है कि मैं भी शुरू के 6 ओवर बहुत अच्छे डाल सकता हूँ, तो फिर कैसे करोगे? 3 बॉलर कैसे डालोगे? then Yeah, पर that's अगर the आपको debate, right? sorry to cut you. बट अगर आपको लिटरली अगर देखा जाए तो आपका हार्दिक पांड्या बहुत प्रॉपर जेन्युइन पेसर बन गया जो पावर प्ले में भी बॉलिंग करा exactly सकता the है. reason. And I in want the depth players In that too. Yeah. So maybe हो सकता है that's the reason why Shardul is being preferred over Shami in and some cases. that is the reason I क्योंकि would rather क्योंकि have शार्दुल Shami. ने लास्ट 4 साल में मिडिल ओवर्स में आई थिंक सेकंड हाईएस्ट विकेट. No, bro. Like Shardul can bring you down anytime. Like I don't consider him a genuine like opening bowler. I don't consider him He's a not a opening bowler. death bowler. He's like Middle. contained, but like then what is he solving? मैं What problem is he solving? I'm talking about numbers. Irrespective of the मैं तुम impact. सबके पॉइंट से एग्री कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, शार्दुल इज जस्ट इन द टीम because he has knack of picking up the wickets. Exactly. That is exactly Over the thing. last few series, bigger series in which we have won, चाहे तुम वो कोहली वाली सीरीज देख लो जिसमें कोहली came back when he was expecting a child. So उसमें भी शार्दुल had this knack of picking up the wickets at right time. Economy is Economy never. is I don't not think so. Economy के लिए उसको डाउन नहीं Right. किया And जाता है. He is there to get Yeah, wickets in and the to middle sum up over. this bowling discussion, Yeah. I would just say हमें इतना याद रखना चाहिए 2011 के बाद जब से हमने कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती है, हम जब भी कोई गेम हारे हमारे बैट्समैन की वजह Batsman की वजह से, से. बॉलर की वजह से नहीं हारे. मैं सेमीफाइनल जो 2015 सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगर आप 335 रन्स वार्नर और वो बना रहे हैं, तो रोहित और शिखर ने भी बना दिए थे 15 ओवर में 100 रन. Exactly. बैटिंग विकेट था वो, तो हर कोई मार खा रहा था, स्टार्क और वगैरह सबने मार खाई थी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो हम लोग ब्लेम डाल देते हैं बॉलिंग पे. बॉलिंग की ब्लेम नहीं है, वो बैटिंग का ब्लेम है. अब for the squad. यार मेरे हिसाब से एक्स फैक्टर लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, मैं पिछले 2 साल से चीख रहा हूँ कि जडेजा शुड बी द एक्स फैक्टर, बट समहाउ रीसेंट फॉर्म्स को देख के मुझे थोड़ा सा स्पेकुलेशन है वहां पे, बट आई स्टिल वांट टू बैक जड्डू एज वन ऑफ माय एक्स फैक्टर्स. बट मेरा जो मेन एक्स फैक्टर है वो है कुलदीप और हार्दिक पांड्या.
The reason for that is पहली बात तो आपने Pick 3 one. एक्स फैक्टर कर लिए, एक एक्स फैक्टर बताओ. चलो ठीक है, हाँ. इतना अगर करना ही है तो ये तो फिर XYZ हो गए. So from my standpoint, I think Hardik Pandya. The reason for that is I want to back him up, considering he knows that he's the next big thing for Indian cricket, especially in white ball. He will be the captain. He will be given the baton from Rohit Sharma. And उस बंदे में इतना पैशन है जो उसने लास्ट कई बड़ी गेम्स में दिखाया है, मुझे लगता है he's gonna be the X factor. Sorry guys, मैं बस इसलिए हंस रहा हूँ, पिछले 2 साल से जडेजा कह रहा है, अब अचानक से हार्दिक पांड्या कह रहा है, तो यार अब इन्होंने मेरे को एक चीज करने के लिए बोला. any idea. I don't have any idea. देखो यार, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं जड्डू को नहीं कर रहा हूँ डिस्काउंट. जड्डू is still my one of the X factor. but इन्होंने मेरे को बोला एक चूज करेगा तो मैंने हार्दिक पांड्या. Okay, Sid, who's your X factor? For me, the X factor. You can go. Oh. निकाल दिया जाएगा. अभी क्या है? For me, the X. Can I go last? I'm still thinking. Like to me, it's Okay, go last. Yeah. Go last, that's fine. Abhishek, Jadeja. X factor. Jadeja, despite his form, despite anything, I know he's gonna come good when it matters the most. Thank you. अच्छा. But Why you are said you Hardik thinking? Pandya. Why are you saying? I'm saying किसी ने हम में से जड्डू को भी ले लिया है, अच्छा. तो that's why I'm satisfied. ठीक है. भाई मेरा X factor सबसे अलग है, but I don't think वो 11 में भी है अभी पहले स्टार्टिंग में. But मेरा अरे यार सिर्फ कट मत करना. नहीं यार, but this is fun. एडिटिंग में दिक्कत है. तो यही तो बात है. प्रसिद्ध कृष्णा 11 का तो 15 में ही नहीं है. स्क्वाड के बंदे का थोड़ी देर बाद बोला वेंकटेश प्रसाद. तूने ही ऐसे बोला मेरा X factor है नहीं. 11 में है ही नहीं मेरा X factor. पर ये मजेदार था. मेरा X factor अबे प्रसिद्ध कृष्णा स्क्वाड में नहीं I है. know, पर यही तो joke था ना. अगर इसने ये बोला होता कि शामी या किसी और को बोला पर होता. यही तो joke था. ओके, एनीवेज मेरा X factor जो है सूर्य है. आई फील कि जो वो बंदा लाता है ना, वो हमारी टीम में 15 बंदे के स्क्वाड में कोई नहीं लाता है. ठीक है, जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है. अच्छा, अब उसमें वो हिट एंड मिस भी हो सकता है. मतलब ये आई थिंक ये इंडिया थोड़ा चॉप होने लगी. जैसे मैं 2011 से कनेक्ट करता हूँ. 2011 में हमारे पहले 3 या 4 मैच में ना यूसुफ पठान खेला था एज अ नंबर 7 बैट्समैन. ठीक है, ही वाज इन हिज पीक फॉर्म. उन्होंने 2 सेंचुरियां लगाई थी, मैच भी जिताया था, सारा कुछ था. लेकिन 4 मैच के बाद जब बड़े मैचेस आए ना, धोनी ने देखा कि वी नीड टू बैक रैना एंड वी हैव टू. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी को आई विश आई प्रे टू गॉड कि किसी को इंजरी ना हो. बट सूर्य समवन की मुझे लगता है कि 38 से 40 ओवर्स में अगर सूर्य बैटिंग करने आ रहा है ना, तो इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर लाइक यू नो एनी कैप्टन. इट्स लाइक अ नाइटमेयर कि फील्ड कहां सेट करो. वो सीधे शॉट खेलने लग जाएगा, उन्होंने पीछे लगाए हैं तो फिर वो पीछे वाले शॉट लग जाएगा. तो ही इज अ नाइटमेयर. बट वही है कि मुझे लग नहीं रहा कि अभी फिलहाल टॉप लेवल में उसकी जगह I बनेगी. think to your defense, as it's a long World Cup, so he will definitely get a run. I कुछ think. ना हाँ for sure. I feel like 15 में जितने भी हैं कहीं ना कभी उनको रन मिलेगा because it's a long World Cup and we're traveling all over the country. So Yeah. I think आगे बोलो. I think the home factor is the X factor for me. Okay. Yeah, I think we have a solid squad. Everyone will play their role, but the biggest thing is like when it comes to pressure game is crowd advantage, home advantage. So that's the X factor. 100k people Yeah. shouting India. Yeah. That's Okay, that's a valid X factor. That's a Valid X factor. Definitely valid X factor. Okay, so now let's go to the main aspect. What's the biggest concern you feel in this Indian squad? Right? Karan, you want to go first? Sure. मैंने लिखे हुए. Oh, yeah. Oh, but इतने concerns तो है नहीं. मेरे पास तो सिर्फ एक नहीं, concern मैं भी है. सोच रहा हूँ मेरे पास है World थोड़े. Cup हमारा भी बोल रहे हैं but अपने concern Okay, guys, थोड़े हैं वीडियो में यार, बिल्कुल guys. अलग है, रियल लाइफ में बहुत अलग है. जो guys मैंने अपनी रिसर्च करी है. हाँ, I want to say बिल्कुल. this. हाँ, बोलो. देखो यार, सबसे बड़ी बात है जो and I think we have seen that in ICC tournaments, which is like the brand of cricket we play, the fearless cricket we play. Bilateral series में our player comes and dominate like कि भाई हम ही माय बाप है, राइट. IPL में भी हमारे बैट्समैन बॉलर्स ऐसे आते हैं कि भाई हम ही हम हैं. But when it comes to crunch matches in the World Cup, last few World Cups और ICC tournaments में हमने देखा कि playoffs में हमारे बैट्समैन और ballers they don't perform. So I feel the fearless cricket has to be there and it has to be consistent. हमें वो noise कट करनी पड़ेगी, players को सोचना पड़ेगा कि वो noise कैसे कट करनी है to play that kind of a cricket, because I feel like they sometimes there's too much pressure and especially आप country में जब खेल रहे हो तो I'm sure आपका बैट बॉय से बॉल बॉय सब आपको ये बोल रहे हैं सर वर्ल्ड कप जीतना है, राइट.
तो वो एक कट डाउन करना जरूरी है एंड आई होप दैट हैपेंस. अगर हम वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते रहे तो मैं तो कोई बड़ी बात नहीं है. राहुल might score a 150 in a knockout game and win us a game because he has that ability, right? So that's my biggest fear. The concern is the due factor, right? Right on time. Right. It's late October, early November. Ahmedabad, Kolkata, Mumbai. These are all any big game you lose the toss. You lose the toss, and then it's your nerves and right the due factor. Even Mumbai, right? हाँ, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता तीनों जो venues हैं, I know for a fact कि late October, early November में due होगी, and जितने भी solution लगा लो, it's not gonna help. Maybe Dharamshala as well, I guess. Yeah, but then I'm only counting the semi-final venues. But right, so वो भी है वो डालते हैं right, like there's some treatment for the due thing as well. तो पता नहीं अब कितनी due होगी और क्या होगा ये नहीं. मेरे हिसाब से मेरा तो ये biggest concern ये है कि भाई I just feel कि यार हम last 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीते हैं. और उसमें होता क्या है कि एक तो ना हारते तो है ही हम, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स जो आते हैं ना वो भी मेरे को बहुत ही वेयर्ड सी लगती हैं. जैसे कि like Virat is my favorite player, but जब हम हारे 2019 World Cup, so he was like we had just bad half an hour. When we lost the World Test Championship, oh we just had like one bad session. I know, but that's the point. That's the point कि भाई वो bad session नहीं होना है. Bad session के लिए तो big players groom करे जाते हैं ना. Otherwise तो फिर हर टूर्नामेंट एक यंगस्टर खेलेगा कि भाई जाओ फेयरलेस क्रिकेट खेलो, जीत गए हार गए. That's how it is. Groom इसीलिए करा जाता है. तो I just want कि जब बड़ा गेम हो ना, बड़े गेम में कलेक्टिवली एवरीबडी शुड स्टेप अप. ऐसा नहीं है कि हाँ बड़ा गेम है तो इसमें सिर्फ धोनी रन मारेगा, या बड़ा गेम है तो इसमें सिर्फ कोहली रन मारेगा. वी डोंट नीड हंड्रेड्स. हमने पहले अपने डिस्कशन में बोला वी डोंट नीड हंड्रेड्स. सब आओ 35-40 इंटेंट से बनाओ एंड विल बी गुड. बट स्टिल आई विल फील कि भाई हम लोगों ने जितने भी कंसर्न रेज करे, ड्यू फैक्टर इज समथिंग लाइक यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, बट दैट इज समथिंग कि भाई आपको पूरे वर्ल्ड कप अपनी एक स्टेटमेंट देनी है कि वी आर द होस्ट, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, we will play this. और कप हमारा है. Yeah. that's it. For me again, like how KD said, like sometimes I feel like in big pressure game, the expectation is so much that you can like feel the vibe in our players that they want it so badly, and then they get like overcautious, and that brings the downfall. So that's the thing, like mental like temperament, strong mentality, especially in big games, just to have that belief and go out. Have that belief, if we are reach the semi-final, we can like go all the way and play the brand of cricket which you know the best. Exactly. Okay. So I guess we should sum up this Indian squad, and in the end I would just like to say कि भाई this is the perfect team. हम चारों के biggest concerns I don't think related to on field थे. Exactly. Right? Yeah. तो I think good thing. and हमारे opinions बहुत differ करते हैं अगर ये discussion हम 2 महीने पहले कर रहे होते. 100%. 2 months में जो इंडिया ने करके दिखाया है, अपना 4-5 सेटल किया है, नंबर 8 नंबर 7 सब कुछ सेटल कर लिया है, सारा कुछ हो गया. I think on paper they are the favorites to win. On paper they are the strongest team, and on paper throughout all the venues, if you look at the World Cup, we have the best 11 for every venue. But it's just that you have to go to the ground, finish your job, Show and intent. make a statement, show your intent. And again, I think on paper से ज़्यादा हमने अब on field भी देख लिया that these on paper guys can actually perform in recent history. Asia Cup is a good example. Exactly. Australia series is a good example. Exactly. Yeah. Right. So any last thoughts? Yeah, for me also, like we have a complete team. I feel like Bumrah getting fit in time, the biggest factor, because if he was not there, death bowling would have been challenged. As we have discussed, there was some, but him coming back, I feel like all for India. World Cup. I think winning the Asia Cup, a multi-nation tournament, gives us real good hope, right? I'm positive, and even though we lost against Bangladesh and lost against Australia, it was not a one-sided loss. I know Australian game was a bit different, but winning the Asia Cup is a big boost, right? So I think definitely on for the World Cup. And from my standpoint, I think it's time. आज हमने discussion कर लिया, but I don't think so. Moving forward, we will be, because we will be supporting our 15 boys who have actually made the squad, and we will be supporting them no matter what. But don't worry, हमारे जो
व्लॉग्स होंगे वो बायस नहीं होंगे. Bias नहीं होंगे. Bias नहीं होंगे. वो अभी We भी respect cricket that much. कंक्लूजन में हम थोड़ा सा बायसनेस अपनी टीम को ऑब्वियसली दिखा सकते हैं because हाँ, नहीं. at the end of the day फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. दिल है हिंदुस्तानी bleed blue. So guys, World Cup हमारा है, right? World Cup World हमारा Cup है. हमारा है. Yay. Let's go. Yeah. Thank you guys. We will be coming back with another video जहाँ पे हम बाकी टीम्स की भी रिव्यू करेंगे and hopefully हमें जल्दी से स्पॉन्सर भी मिले तो हम brought to you by बोल सके. Yeah guys, please like, subscribe and share Crickbucks channel Yeah. and you're gonna get your daily dose here. Take care guys. Bye guys.